एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। इस चैप्टर इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जामिनेशन में 1 or 2 क्वेश्चंस 100% आएगा इसमें से। एंड वन मोर थिंग, दिस इज वेरी इजी चैप्टर है। अभी देखने को सुनने को ये चैप्टर बहुत हार्ड जैसे दिखता है, मगर ये बहुत इजी चैप्टर है। अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। Okay students, now we are discussing electrochemistry. Electrochemistry is the branch of physical chemistry which deals with the relationship between chemical energy and electrical energy. Chemical energy and electrical energy taking place in redox रिएक्शंस। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें मेनली हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। हाउ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए redox reaction can be converted into electrical energy, how electrical energy can be used to bring about a redox reaction. We know that some chemical reactions requires electrical energy and some reactions produce electrical energy. Mainly electrochemistry is the study of conversion of chemical energy into electrical energy and vice versa. Electrochemistry is study of conversion of chemical energy to electrical energy. And vice versa. In chemistry में हम chemical energy, how to convert electrical energy and electrical energy, how to convert chemical energy के लिए हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यह chemical energy is converted into electrical energy and electrical energy converted into chemical energy. For conversion of electrical energy, we need electrochemical cell. We need electrochemical cell and current conducting material. Here, for this conversion, we need electrochemical cell and current conducting material. Under electrochemistry, we study mainly two types of cells. They are
electrochemical cell. Here, what is cell? We know that here chemical energy converted into, this is device converted into electrical energy. And electrical energy converted into chemical energy by the using device. The device is cell. Cell is a site of electrochemical process, or the device which is occur the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. This device is called cell or electrochemical cell. Now, under electrochemistry, we study about two types of cells. One is electrolytic cell, and second one is galvanic cell. हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी क्वेश्चन के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम टू टाइप्स डिवाइड करते हैं, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एक galvanic cell. Now discussing electrolytic cell. What is electrolytic cell? A cell, it requires EMF. Here EMF means electromotive force or electrical energy. It requires EMF. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इट इज रिक्वायर्स EMF. बट इन गैल्वेनिक सेल it produce EMF. गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, इधर रिएक्शन अपने आप चालू होता है और रिएक्शन चलने वजह से इधर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है. वेयर इन गैल्वेनिक सेल में. इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल a non-spontaneous reaction is carried out using electrical energy. And in galvanic cell, the energy generated by a spontaneous reaction to converted electrical energy. Here in electrolytic cell, एनर्जी देने वजह से रिएक्शन चल रहा है. इधर रिएक्शन चलने वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है. दिस इज मेन डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन गैल्वेनिक सेल. इट इज रिक्वायर्स एनर्जी, इट प्रोड्यूस एनर्जी.
And in this electrolytic cell, what happens? Electrical energy is converted into electrical energy is converted into chemical energy. Here what happens? The chemical energy is converted into electrical energy. And in this electrolytic cell, anode पॉजिटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड ये कैथोड इज माइनस चार्ज. एनोड इज कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, here cathode negative charge. Where? In electrolytic cell. In galvanic cell, anode is negative and cathode is positive charge. Yeah, this means reactions. These are irreversible, and these may be reversible. This is a relation between electrolytic cell and galvanic cell. Here एनर्जी देने वजह से रिएक्शन चल रहा, दैट इज रिएक्शन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पॉजिटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज, एंड दिस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल. कार्बोनिक सेल रिएक्शन चलने वजह से एनर्जी रिलीज होता है. और in this galvanic cell what happens, the chemical energy is converted into electrical energy. In this galvanic cell anode is negative, cathode is positive, and these reactions may be reversible. Means here forward reaction and backward reaction, two reactions possible as. This is the electrochemical cells. Generally we are using the important terms in this chapter. One is oxidation. What is oxidation? It is loss of electrons. And reduction. What is reduction? Gain of electrons. Anode. What is anode? Where oxidation takes place. Cathode. What is cathode? Where reduction takes place. This is important terms. Oxidation means loss of electrons. Reduction means gain of electrons. Anode, where oxidation takes place. Where oxidation takes place, that is called anode. Cathode means where reduction takes place. One more thing here, reactivity order of series.
that is here lithium more reactive than potassium, it is more reactive than magnesium, it is more reactive than zinc, it is more reactive than iron, it is more reactive than tin, it is more reactive than lead, it is more reactive than hydrogen, it is more reactive than copper, it is more reactive than silver, it is more reactive than iron, it is more reactive than platinum. This is the reactivity order. अगर हम गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड लिए, एक जिंक एंड एक कॉपर. In these two electrodes, which is more reactive? Zinc. Then what happens? It is immediately loss of electrons to form oxidation. Where? That is anode. Oxidation takes place at anode. तो इधर क्या हो रहा है? Zinc more reactive than copper. तो zinc loss of electrons. Then what happens here? Oxidation reaction चल रहा है. वो किधर कहाँ चल रहा है? Anode कने. Then what happens there? It is release electrons. Electrons means negative charge. Then anode is negative. Here zinc release electrons. Then copper gain electrons. It is undergoes reduction. Where? At cathode. Where? At cathode. It is gain of electrons. Actually, it is positive ion. It is gain of electrons. So here it is called positive charge. This is important terms in electrochemical cell.